Hey guys, welcome back to Study with Vaishnavi Jha. In the last class, we already discussed the types of asexual reproduction. Two types we have already discussed. First is fission and second is fragmentation. What is fission? It is division. Okay, when the division of parent cell is into two daughter cells, then it is known as binary fission. And if there is multiple division, then it is known as multiple fission. Binary fission is seen in amoeba and multiple fission is seen in paramecium. Then we studied fragmentation. In fragmentation, we discussed that when the parent body is matured, it breaks into two pieces and then two fragments, you can say, and then each fragments gets divided into each fragments grows into a new individual. So this we studied, and now today we are going to start with next type of asexual reproduction, which is regeneration. Okay, so let's start. In this reproduction, when an organism is cut into pieces, when an organism is cut into pieces, each piece grows into a new individual. Each piece grows into a new individual. Example, Planaria and Hydra. See what happens. You will understand it with the help of a diagram. So, suppose this is a Planaria. Okay. Now what happens to this planaria when it gets cut into, suppose it gets cut into three pieces. Okay, this is parent planaria. Now each piece like this, kind of like this. And last part is like this. This is head, thorax and tail. Okay, this is head, this is thorax and this is tail. Now see what happens. This head develops the rest part of the body in it, and similarly the thorax develops the rest part of the body in it, and tail also develops the rest part of the body in it. So what happens, from one parent cell, three new individuals have been grown. Okay, so like this you can draw. एंड फिगर्स आप प्लीज अवॉइड मत कीजिएगा क्योंकि फिगर्स पेपर में आते हैं. ठीक है, मुझे पता है कि फिगर बनाना पसंद नहीं होता है, बट मैं आपको बताती हूँ फिगर बनाना इज द मोस्ट इजी थिंग इफ यू कम इनटू प्रैक्टिस. आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाए तो. ठीक है, एक बार आपको आदत पड़ जाए ना फिगर बनाने की, फिर आपके लिए कोई फिगर बनानी मुश्किल नहीं रहेगी. बट यू हैव टू बी अ बिट यू नो a practitioner in this case. So if this is the body, then it will develop a head kind of like this. And like this. And here this is the tail, so obviously the rest part of the body like this. Right? So now this is a full grown individual. This is also a full grown individual. And this is also a full grown individual.
as you can see that from one parent, 3 daughter cells have been, 3 planarias have been grown, right? So these are progenies. And this is regeneration in planaria. See, this regeneration in planaria, it has come in the previous year for 5 marks. For this much of this much has come for 5 marks in the previous year. I do not remember the year, but yes, it has come. I know. The question asked was define planaria, define regeneration, explain regeneration in planaria with the help of diagram, and it was a question of 5 marks. Okay, so अब सोचेंगे कि क्या इसमें इतना क्या लिखना है. यू कैन एक्सप्लेन दिस डायग्राम. ओके, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं मैं आपको यहाँ पे खाली शॉर्ट में बताती हूँ. ओके, एंड यू कैन इलेबोरेट दैट पॉइंट्स. सो बेसिकली व्हेन इट कम्स फॉर 5 मार्क्स, हाउ कैन यू एक्सप्लेन, क्योंकि आप जितने भी टाइप से पढ़ने वाले हैं इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक डेफिनेशन, वन डायग्राम, इट्स डन, राइट. जिन बच्चों का डायग्राम में विश्वास नहीं है वो तो भाई एक लाइन की डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल एंड डन, बट दैट वोंट गिव यू 5 मार्क्स. 5 नंबर नहीं मिलेंगे उससे. सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट थिंग यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम्स. कितने फनी फनी से तो डायग्राम्स हैं, देयर इज नथिंग वेरी डिफिकल्ट इन इट. एंड सेकेंड थिंग कि आप उस डायग्राम को, यू मस्ट हैव द कैपेसिटी टू इलेबोरेट दैट डायग्राम. आंसर खींचना नहीं है, जो डायग्राम में बनाया है जस्ट यू इलेबोरेट इट एंड यू आर डन. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आई गिव यू एन एग्जाम्पल, सो you can write as shown in the figure, parent planaria divides or cut into how many pieces? 3 pieces. What are the 3 pieces? Head, thorax and tail. Each piece grew separately. Three new individuals have been formed. 3 new individuals have been formed. So when you write these points, it will approximately end up giving you 3 points. 3 नंबर आपको 3 points इसमें मिल जाएंगे. And if you get 3 points in this, 1 marks for this, 1 marks for diagram, and you are done with the 5 marks question. राइट. तो आपको ध्यान में रखना है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी ने भी, कोई भी अगर आपको पढ़ाएगा तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है, वो आपको मेन चीज ही बता सकता है ना, कि भाई व्हाट इज रीजनरेशन एंड हाउ टू ड्रॉ इट्स डायग्राम. किसी का भी यही काम है, वो आपको इतना ही बता पाएगा ना. उसमें से आप अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया एंड आप उतना ही लिख के आ रहे हैं एंड देन यू ब्लेम समबडी कि ये तो मुझे तो इतना ही मैम ने कराया था या सर ने कराया था, तो मैं तो इतना ही लिख के आया, मुझे पूरे नंबर नहीं मिले. नाउ दैट्स नॉट फेयर. वो चीज ठीक नहीं है, क्योंकि वो आपको उन्होंने जो है रीजनरेशन दे एक्सप्लेन्ड. नाउ हाउ टू अचीव 5 मार्क्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ये आपका आर्ट है. ठीक है, आप उस आंसर को कैसे इलेबोरेट करते हैं, है ना, आप उसमें कैसे अपना इनपुट देके उसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन में से 5 नंबर ले सकते हैं, ये आपका इनपुट है. तो इसको आप लोग जो है
वो सीखिए कि आंसर्स को कैसे इलेबोरेट करना है, और ये सीखने के लिए आपको जरूरी क्या है, टू अटेम्प्ट एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। सैम्पल पेपर्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। आप जो इतनी एक्स्ट्रा बुक्स आप लेते हैं, आप कोई एक एक्स्ट्रा बुक रखिए अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी एंड डू एवरी क्वेश्चन ऑफ दैट बुक, एवरी क्वेश्चन, उस बुक को एकदम खत्म कर दो। तब जाके when you will face approximately 30 or 50 questions from each chapter, then you will be an expert। ठीक है, 50 क्वेश्चन एक में से कर लोगे, हो गया आपका पूरा चैप्टर ऐसे ही प्रिपेयर। सो ट्राई डूइंग दैट, बिकॉज सिर्फ डेफिनेशन और सिर्फ डायग्राम जो पढ़ के गया है, वो ये गारंटी नहीं है कि वो पूरे नंबर लेगा इसमें। बट जो बच्चा इसी रीजनरेशन के टॉपिक पे कम से कम 8 क्वेश्चन लगा के गया है, देन उस बच्चे को कोई चांस ही नहीं है कि उसको कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, राइट। ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड देन वी विल स्विच टू नेक्स्ट टॉपिक। Okay, so next part is budding. So what happens in budding, that a plant, the parent plant, it grows a small bud, okay, in its body. That bud keeps on maturing, and when it is fully matured, that bud gets detached from the parent's body. Very simple it is. You will understand it with the help of diagram. Okay. So for example, if this is a hydra, this is hydra, okay, this is parent hydra. So what happens to the parent hydra? A small bud grows into its body, kind of this is what it is, bud. Now this bud will keep on maturing. Kind of this bud keeps on maturing like this, and when it is fully matured, when it is like this, fully matured, then it gets detached from the parent's body. So it will get detached in the next stage. So this gets detached from the parent's body like this. Like this. This is the progeny hydra. So this is the cycle which goes on, that a small bud is developed in the parent's body. That bud starts growing, and when it is fully matured, it gets detached from the parent's body. So you can write here fully matured. Okay, this is important one, and you can take a screenshot of it. Okay, so next type is vegetative propagation. So what is vegetative propagation? Since it has the word vegetative, so in this type of reproduction, the vegetative part of plants are responsible for reproduction.
means the reproduction takes place in vegetative part of the plant. Vegetative means non-reproductive parts. The plant's reproductive part is a flower. Apart from flower, if there is any reproduction at any place, that is a vegetative part. Like leaves, roots and stems, ये vegetative part है. यहाँ पे reproduction genuinely नहीं होता है. Generally it's not seen, but what happens that if it is taking place at a vegetative part like leaves, roots and stems, then it is known as vegetative propagation. Okay, so in this, new progeny is grown on a vegetative part, example leaves, roots and stems. So in roots, sweet potato, radish are the example, leaves, potato is the example. Oh sorry, it's by stem. By stem. And by leaves, bryophyllum is the example. Bryophyllum क्या होता है? देखिए bryophyllum का example से आपको समझ आ जाएगा. If this is the leaf of a bryophyllum, okay, then what happens? New plants start growing here. इस तरीके से न्यू प्लांट जो है वो यहाँ एजेस पे ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है इस तरीके से. एंड व्हेन इट बिकम्स फुल्ली मैच्योर्ड इट गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट. सो दिस इज हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन वेजिटेटिव propagation. Then there is another artificial method known as tissue culture. This is an artificial method. So in this, what is done? The growing tip of the plant is cut and it is put or kept into a medium, okay, which is very much nutrition full medium, okay, and there that growing tip grows, the tissue grows. Then it is shifted to the hormone rich solution so that it has some growth. तभी तो प्लांट बनेगा ना, ग्रोथ तो चाहिए उसके लिए. तो बस ये दो चीजें की जाती है एंड देन अ न्यू प्लांट इज जनरेटेड. तो ये भी एक तरीका है. इट इज आर्टिफिशियल मेथड एंड इट इज यूज्ड टू ग्रो प्लांट्स that have lost their capacity to produce seeds. जिनकी कैपेसिटी से बाहर है अब सीड्स प्रोड्यूस करना, जो ओल्ड प्लांट्स है उनसे भी न्यू प्लांट्स जनरेट करवाए जा सकते हैं. एंड सिमिलरली कैन ग्रो प्लांट्स ऑफ सीडलेस फ्रूट्स लाइक बनाना. ओके, सो दिस इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. So last part of asexual reproduction is spore formation. What happens in this kind of reproduction? The sporangium germinates in favorable conditions. So as you can see, this is sporangium. It is a bulb-like structure. Okay, and when it gets the favorable condition like moisture, it germinates and the spores come out of it. These are the spores, and these spores will grow into a new organism. Okay, a new individual. So this kind of reproduction is spore formation. Example is rhizopus. This is also seen on the bread molds. You see the black area when it gets when it gets rancid. So that black area is the formation of spores only. Okay, that gets black because of the formation of spores. The sporangium in it breaks. Okay, and the spores come out of it, because of which the bread becomes rancid. So this is it. So this is it for today's class, and in the next class we will discuss sexual reproduction, and we will start with sexual reproduction in humans because it is comparatively in comparison to plants, it is lengthy also, but it is very easy also to understand. So first I will start with sexual reproduction in humans. So see you in the next class. Bye bye. Take care.